vessel of length, a vessel of length 145 meters, HF, HF 3 meters forward of midship, three meters forward of midship, MCTC 150, TPC 18, AM 7.5, Sir, please repeat. AM 7.5, KG 6.9, W 11,200, forward draft 3.72, half draft 5.70, is floating in a dry dock. Where So floating in dry dock. where the dock water height is 6.50 meters above the top of the blocks. Calculate the vessel's RGM and her drafts forward and aft. When waterline is lowered by Sir, repeat करना एक बार. when waterline is lowered by 1.5 meters. Is the question okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. So these are the typical type of questions which come in the exam. इस टाइप के आते हैं. जो अभी तक हमने करे थे वो खाली बेसिक्स थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड उसकी एप्लीकेशंस आएंगी आगे एज वी मूव फॉरवर्ड. तो
तो वाटर लाइन जब लोअरिंग हो रही है 1.5 मीटर की, मेरी ओरिजिनल डॉक वाटर हाइट 6.5 थी, डेढ़ मीटर पानी नीचे गिरा, तो फाइनल डॉक वाटर हाइट कितनी होगी? 5 मीटर। ठीक है, तो 6.5 माइनस 1.5, 5, तो 5 मीटर मेरे फाइनल डॉक वाटर हाइट होगी। मेरा आफ्टर ड्राफ्ट 5.7 है, तो मतलब सब अब ब्लॉक पे बैठने के बाद भी एक तरीके से 0.7 और कम हो गई। बिल्कुल इट ठीक। इज बिटवीन, इट इज आफ्टर पे नंबर 3। तो नहीं, एक मिनट, होल्ड इट। 5.7 पे मेरा आफ टच डाउन कर गया, क्रिटिकल इंस्टेंट चालू हो गया सर, क्रिटिकल पीरियड। पीरियड चालू हो गया, करेक्ट सर, 5 मीटर्स पे। तो 5.7 पे मेरा क्रिटिकल पीरियड चालू हो गया, सर आफ टच करेक्ट कर सर, गया। यस सर, यस तो सर। मेरा आफ टच कर गया। क्वेश्चन ये है, क्या मेरा फॉरवर्ड टच करेगा? वो मुझे नहीं पता। नहीं पता सर, 70 सीएम अभी पानी रह गया है। अभी 70 सीएम ने पानी ने गिरना है, जो कि गिरेगा। यस सर, अब उस दौरान में क्या मेरा बाउ टच कर जाएगा कि नहीं करेगा, ये मुझे नहीं पता। यस सर, यस सर। ओके, तो all these questions come under the gamut of this fall in water line. And fall in water line का जो P का फॉर्मूला है वो है मीन राइज। ये मेरा P का फॉर्मूला है, प्लस change in trim at the point of contact is equal to fall in water line after contact or change in draft at point of contact. Mean rise plus change in trim at the point of contact is equal to fall in water line after contact or change in draft at the point of contact. Mean rise का मतलब है P upon TPC plus Sir, like this is given, like we have to by heart the formula, or it is yeah, something application? yeah. This is, you just have to remember this. Okay, sir. Mean rise plus change in trim at the point of contact is equal to fall in water line after contact. You will be using the final formula. I'm just leading you to the final formula. So P upon TPC is mean rise. Change in trim at point of contact. Point of contact is aft, so TA is equal to the fall in water line after contact. P upon TPC. Change in trim TA, because aft में मेरा contact हो रहा है. So TA I know is equal to TC into LCF
upon LBP is equal to fall in water line. TC I know is trimming moment upon MCTC. Trimming moment is, this is trimming moment upon MCTC into LCF upon LBP is equal to fall. Trimming moment I know is P into LCF upon MCTC into LCF upon LBP. ये डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट देन आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि जब मैं बाद में इसकी एप्लीकेशन और भी यूज करूंगा तो ये समझ जाएगा, बिकॉज आई बी यूजिंग दिस फॉर ग्राउंडिंग ऑल्सो, सेम चीज यूज होगी ग्राउंडिंग में, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूं. ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है. मुझे इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट है. दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट. P upon TPC plus P into LCF square upon MCTC into LBP is equal to fall in waterline after contact. ओके, अब इसके यूनिट्स चेक करते हैं. P is tons, TPC tons per centimeter plus P tons, LCF square meter square, MCTC ton meter per centimeter, LBP meter. So let's start cutting. Tons, tons, centimeter goes on top. Ton, ton, meter square, centimeter goes on top. राइट हैंड साइड का यूनिट्स क्या होगा? राइट साइड का यूनिट्स आपका सेंटीमीटर होना चाहिए. एग्रीड? यस सर. ओके, तो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है फॉर वाटर लाइन नंबर 2.5. जब भी क्वेश्चन में अगर मैं वाटर लाइन नंबर 2.5 में आता हूं तो मेरा फॉर्मूला नंबर 1 जो पी का था वो ये होगा. This becomes my formula for calculating P at waterline number 2.5. That means during the critical period. Formula number 2 will remain the same. Formula number 3 will remain the same. ओके सर. Clear है? So formula number 1 बदल गया, 2 and 3 सेम रहने वाला है.
तो ये टीए लिखा है आपने, चेंज इन ट्रिम एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो ये चेंज इन ट्रिम है सर कि एट पॉइंट एट ऑफ व्हाट वाज द ट्रिम एट दैट टाइम? नहीं, दिस इज द चेंज इन ट्रिम एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब टीए। सी ट्रिम जो थी उसका एक कंपोनेंट है टीए, उसका एक कंपोनेंट है टीएफ, तो वो बात कर रहे हैं, टीए की बात हो रही है, चेंज इन ट्रिम। बेसिकली मोटा मोटा तो now let us start our question having with this background। अब क्वेश्चन शुरू करना है हमें। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आई नीड टू, दिस इज अ क्वेश्चन of waterline 2.5, this is an ambiguity for me. I need to check for waterline 3. I need to do a check. So calculate P3. अगर मेरा जहाज waterline 3 पे आता है, दैट मीन्स इवन कील पे आता है, तो उसके लिए P क्या होगा? So write down the formula. Agreed? Yes, sir. Yes sir. Okay. Calculate P3. 404.08. Let me just check. So how much is the initial trim? 1.98. 1.98. So 198 into MCTC 150. 50 upon LCF. LCF is 73.5. LCF is 72.5 and 75.5. 75.4. Yes sir, 75.5. So how much is your P3? 393.37. 393.37. Is this okay with everyone? Okay. Now I come to this long formula. या मेरा ये टक गया कि सबका टक गया है? अटक गया है। सर हाँ जी. सर वीडियो पॉज हो गई थी सर, वो Yeah, कैलकुलेट करने के बाद। yeah. Yeah. So this is the formula for the long formula. This balance to fall, the right hand side, is how much? That is
At 5.70, the touchdown happened. And the final dock water height is 5 meters. That means basically the total fall minus the UKC ये समझ में आया कि नहीं? सर वो क्या लिखा है RHS? Right hand side. No sir, no. RHS is right hand side. Okay sir. Balance to fall is equal to total fall minus the UKC. Total fall given in the question is 1.5 minus the UKC is 0.8. सर ये थोड़ा रिपीट कर देंगे सर, नहीं समझ में आ रहा सर. नहीं समझ में आ रहा. Okay. Okay. Let me draw a diagram. सर किसी का माइक ऑन है सर. Can you just mute your mics, please? तो ये जहाज है. ये इनिशियल कंडीशन में वाटर लाइन नंबर 1 में है सिचुएशन. ये वाटर लाइन है. इस वक्त फॉरवर्ड का ड्राफ्ट 3.72 है. आफ्ट का ड्राफ्ट 5.70 है. इस वक्त डॉक वाटर हाइट 6.5 है. तो हाउ मच इज द यूकेसी? Point 8. 0.8. 0.8. ऑलराइट. मेरे पानी में गिरना है 1.5 मीटर. तो जब 1.5 मीटर पानी गिरेगा तो जो पहला 0.8 पानी गिरेगा उसमें तो कोई पी होगा ही नहीं. एग्रीड? Yes sir. Yes sir, agreed. There'll be no P. Right sir. The P will Right, sir. only start when the UKC becomes 0. Water line Yes, sir. number 2. Water line number 2. So how much is the balance to fall after contact? Yes. 1.5 में से 0.7 0.8 चला गया बिना किसी पी के. बचा कितना? Yes sir. 0.7 sir. उसका मैंने एक फॉर्मूला निकाल दिया है. Balance to fall, that is your right hand side, is equal to the total fall given in the question 1.5 मीटर minus the UKC. ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया जस्ट इन केस आपको ये समझ ना आया हो तो इसलिए. Sir, we can state that as at the dot water is 6.50 minus 1.5 is 5 meter, then minus by the draft of we get 0.7. Absolutely. That is also. वो भी एक तरीका है. That is also another way of reaching the same point. ये समझ में आ गया कि नहीं? Yes sir. Okay. All right. So
Can you now put all the values in this and calculate the P? Nine nine eight decimal 352. No. Something is wrong. The 267.1. No. Something is wrong. 220 के करीब आना चाहिए. Sir, 220.433. Correct. आपका सेम आया कि नहीं? कितना सर? 220. सर 220.378. 395. हाँ जी. 395 सर. 220395. Okay, सर it's the same. 220.378. Done. All are Sir, okay. 3 decimal basis तक लिया है सर मतलब. Correct. So, this is fine. कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि this component is something P. This component is also something P. So something P plus something P is equal to 70. So P is equal to what? You know, that's how you'll do it. So you're getting those 220.397.433, all is equal, all is fine with me. No issues. अच्छा, यहाँ पे P3 हमारा कितना आया था? 393 डेसिमल 377. 77. 377. Okay. Now we find that 220 is less than 393. That is, P is less than P3. Hence, what do you infer?
What do you infer? कि सर अभी तक टच नहीं हुआ है, मतलब टच नहीं हुआ सर, तक पहुंचने में अभी कम वेट है, मतलब वेट हाँ। पूरा डिस्चार्ज नहीं It is हुआ। from 2 to 3. Correct. Hence, critical period is not yet over. Finish, completed. ये समझ में आया कि नहीं, ये वाली पार्ट? सर एक बार वापस बता दोगे सर प्लीज? हाँ जी, 220 तक ओके है? यस सर। ऑलराइट, तो 220 अभी है और 393 होना चाहिए अगर जहाज क्रिटिकल इंस्टेंट पे आ जाए, यानी कि क्रिटिकल पीरियड खत्म हो जाए। लेकिन अभी तो 220 ही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहाज में अभी कुछ ट्रिम है बाकी। इसका मतलब है क्रिटिकल पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ। करेक्ट और नो? अगर ये P इस लॉन्ग फॉर्मूले से मेरा 420 आता तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्रिटिकल पीरियड ऑलरेडी ओवर। ऑलरेडी खत्म हो गया। तो कौन सी वाटर लाइन पे चला गया मैं? आफ्टर 3। आफ्टर 3, बिल्कुल सही। मतलब 3 खत्म हो चुकी है और आफ्टर 3 पे मैं ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकता। एग्रीड? यस सर। ये वाला फॉर्मूला मेरा सिर्फ 2.5 के लिए है, तो मैं ये यूज ही नहीं कर सकता। Yes sir. तो मेरा ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला था। तो इसलिए मेरा जरूरी है ये चेक करना, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में फॉल कितनी दी गई है। सपोजिंग मैंने फॉल आपको 2 मीटर दे दी होती तो आप तो चल पड़े। तो अभी इसका मतलब है क्रिटिकल पीरियड खत्म नहीं हुआ। देयरफॉर करेक्ट P इज इक्वल टू 220.3797 टन। ये समझ में आ गया? इज इट ओके? यस सर। ओके। ओके Yes sir. ओके। अब फॉर्मूला नंबर 2 पे चले जाओ और मुझे वी लॉस की वैल्यू बताओ। .148. Yes sir, 0.148. सबका सेम आ रहा है। Go to formula number 3, calculate RGM.
0.452 RGM. ठीक है, ये RGM है हमारी। ओके, अब ड्राफ्ट्स पे आना है। नो वी कम टू द ड्राफ्ट्स। तो P हमें पता है, कैलकुलेट द मीन राइज। $12.244, sir. To meter. Calculate the TC. One 110.932. 3 centimeters. Calculate TA. अब मैं बेसिकली फॉर्मूले में घुस रहा हूँ. That's what I'm doing. And I'm simultaneously revising your second math का formulas. वो साथ साथ चल रहे हैं. $57.761. Now calculate TF. Change interim forward. Plus TC. Plus TA. $53.171. Okay, मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं. I just have to make a drafts table now. So I make a drafts table. भाई माइक बंद कर लो यार. सर ये क्या लिखा है ड्राफ्ट? Table.
This is the draft table I'm making. Forward and half draft. तो जो हम सेकेंड मेट्स में करते थे, इनिशियल ड्राफ्ट्स 3.72, 5.70. This is my initial drafts. I will have a mean rise. So forward draft minus, half draft minus 0.1224. 0.1224. TFTA. Forward मेरा बाउ नीचे जा रहा है, तो TF will का साइन will be plus. Aft मेरा aft turn उठ रहा है, aft will be minus. Convert to meter. 0.532. 0.5776. This will give me draft forward. This will give me draft aft. मेरा फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट 5.50 बनना चाहिए. क्यों? 5 मीटर बनना चाहिए, सॉरी. क्यों? इनिशियल डॉक वाटर हाइट मेरी 6.5 थी, 1.5 मीटर पानी गिरा. फाइनल डॉक वाटर हाइट 5 मीटर. मेरा फाइनल आफ ड्राफ्ट कितना होगा? उतना ही होना चाहिए, 5 मीटर. तो ये मेरा चेक बनेगा, इसको मैं करता हूं तो ये आना चाहिए. अब फॉरवर्ड ड्राफ्ट निकालो. 4.1752. 4.175. 175. सबका सेम आ रहा है. और इसका पीछे का इसका सारा करने के बाद में, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 5 मीटर आना चाहिए. सर आ रहा है. So that means I'm on the right track. मैंने जब शुरू किया था क्वेश्चन, मुझे हाफ ड्राफ्ट फाइनल पुल ऑलरेडी पता था, 6.5 माइनस 1.5 5 मीटर. इसका मतलब मेरा हाफ ड्राफ्ट भी 5 मीटर होना चाहिए. सिग्नल नहीं आ रही क्या? अब चलेगा क्या सर? हाँ जी. You can't see anything? No sir, we can't see. Correct. Others, can you see? Yes, sir, we can see. Yes. Okay. Yeah, you're visible. एक मिनट जरा फिर लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, इन केस यू कांट सी. सर ये कैलकुलेशन के बाद वापस बताइएगा सर, ये ड्राफ्ट टेबल है. So this is your initial drafts. You had a mean rise, so minus minus दोनों जगह पे, because your bodily rise किया, and your bow has come down. So TF का साइन प्लस, and अगर TF का साइन प्लस तो TA का साइन माइनस. That will give you your final draft. सर ये वापस बता दीजिए एक्सप्लेन करके, ये कैसे प्लस माइनस है? ये मेरा जब ड्राफ्ट जब ये मेरा बाव नीचे जाएगा, जब T पीछे से एक्ट कर रहा है, तो मेरा आगे का ड्राफ्ट बढ़ेगा क्योंकि बाव नीचे जा रहा है.
तो प्लस होगा, यस चेंज इन सर। ट्रिम, टीएफ का साइन प्लस होगा, अगर टीएफ का साइन प्लस होगा तो टीए का साइन माइनस होगा। ठीक है सर। तो मीन राइज में दोनों माइनस, एंड जब ये प्लस तो ये माइनस। जैसे ये कैलकुलेशन आप सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक करते हो ना सर? दैट्स राइट। बिकॉज़ व्हाट आई एम सर ये कैलकुलेशन मैच नहीं करता ना आई फोर थिंक ये कैल क्यों आपकी क्या नहीं मैच कर रही 4.17 बताओ? सर जो फॉरवर्ड So वाला forward आता ड्राफ्ट है क्या आएगा? 4.129 आ रहा है। 129 ये फिर गलत 129 है, आएगा, एक मिनट, ये फिर गलत है। वहाँ पे कंफ्यूजन हो रही तो है। कैंसिल। 130 सर, टू बी एक्यूरेट 130। ओके 4.129 और 130, दैट इज करेक्ट, देन दिस इज, वो गलत लिखा था मैंने, जस्ट चेक कर लेना अपना आंसर प्लीज। नाउ इज इट मैचिंग? यस सर। यस सर, नाउ मेक सेंस सर। ओके, so in such a question the first half draft answer is already known to you before you start the problem, because 5.7 पे ऑफ टच कर गया था। जब ऑफ टच कर गया उसके बाद थोड़ा सा पानी नीचे 5.69 जाएगा डॉक वाटर हाइट, ऑफ ड्राफ्ट विल आल्सो बी द सेम and it'll keep going